So as I discussed with you in the previous lecture class, now I will start the new topic, Sturm-Liouville's problem. So let's start it. Okay. Sturm-Liouville's problem. In short, we write it SLP. Okay. Any differential equation of this form, any differential equation of the form d by dx Rx into dy by dx dy by dx plus qx plus lambda px y is equal to 0. Say that it is equation number 1. So this type of differential equation where lambda is a real constant, this lambda is real constant, and this Rx, Qx and Px is independent of this lambda. So this differential equation is called Sturm-Liouville's equation. This type of differential equation is called Sturm-Liouville differential equation. Yes, Sturm-Liouville's equation. So any equation which can be written in this form is called Sturm-Liouville's equation. For suppose, if here I am considering a second order differential equation, y double dash plus lambda y is equal to 0. It is a homogeneous second order differential equation where you can write it like d by dx dy by dx lambda y is 0. So when we are comparing this equation with this equation number 1, you can find here Rx is 1, Qx is 0, and Px is 1. So for particularly Rx is equal to 1, Qx is 0, and Px is equal to 1 for this differential equation is a Sturm-Liouville's equation. Okay. In the same manner, if we are taking Rx is 1, for suppose for the second case I am taking here Rx is equal to 1 minus x square, 1 minus x square, and Rx is 1 minus x square, Qx is 0, Px is 1, and here particularly lambda is n plus 1, n plus 1. For suppose if Rx is 1 minus x square, Qx is 0, Px is 1, and lambda is n into n plus 1. Substituting this value in equation number 1, then what equation we will get? Substitute करिए ये सारी values. Legendre differential equation. Yes, Legendre differential equation. It means that Legendre differential equation is again a Sturm-Liouville's equation. Okay. So Legendre differential equation for the given Rx, Px, and Qx, that values of that set of values of Excuse me, Rx, ma'am. Px, yeah. And please show the previous slide once again. I couldn't note it. Yes, ma'am. क्या कह रहे हो? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? I'm note Ma'am, नहीं कर पाए थे. please show the previous slide. Previous slide. Okay.
Rx is 1 minus x square, Qx is 0, Px is 1, and lambda is n plus 1. Substitute all these value in this equation number 1 and then solve it. You will get the Legendre differential equation, which you have already studied in previous lectures. Okay, now come on the Bessel differential equation. Now we will consider the Bessel differential equation. You know that Bessel differential equation is x square y double dash x y dash plus x square minus n square y is 0. Okay, and this is defined for the domain x is not equal to 0. Okay, so we want to write this equation in Sturm-Liouville's equation form. Okay, so here I am taking a substitution. Let x is equal to kz. Okay, so here I am changing the independent variable from x to z. Okay, so you know that y prime is denoting dy by dx, y double prime is denoting d2y by dx square. Now we have to find this dy by dx in terms of dy by dz, and also d2y by dx square in terms of d2y by dz square and dy by dz. Okay, let's start. Okay, dy by dx, we can write it like dy by dz into dz by dx. You can find from here dz by dx is 1 by k. Okay, so this will give you 1 by k dy by dz. Okay, similarly we can find d2y by dx square. It will be d by dx of dy by dx, and you can write it d by dz into dz by dx, and here dy by dx is 1 by k dy by dz. Okay, this dz by dx will give you 1 by k, and dy by dz 1 by k square dy by dz. This will give you 1 by k square d2y by dz square. Okay, now substituting all this value in this equation, say that it is a star equation. So substituting this value in this star equation, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. So we will get, in place of this x square, it will be kz square and 1 upon k square d2y by dz square and kz 1 by k dy by dz plus this x is replaced by kz square minus n square y is 0. Now here this y is not the function of x, it will be yx लिख देते तो yx is ykz here. Okay, इसको अब simplify कर लेते, solve कर लेते हैं. Now solving this equation, we will get this k will be cancelled here, and we have to divide the whole equation by z. Now we will divide the whole equation by z. कर दीजिए z से. If we are dividing the whole equation by z, we will get d2y by dz square plus dy by dz plus k square z minus n square z y0, n square y0. Yes. Now, in place of these first two terms, we can write here d by dz, z into
dy by dz plus n square z plus k square z y is 0. Now comparing this equation with Sturm-Liouville's problem. So here rz is z, rz is z, qz is minus n square by z. Okay, and px is pz is z, and lambda is k square. Lambda is here k square. So this is the again Bessel differential equation is written in the form of Sturm-Liouville's equation. तो यहाँ पे ये Sturm-Liouville's equation टाइप की हो गई. Okay, so these are the equations, second order linear differential, homogeneous linear differential equation, which we can write in the form of Sturm-Liouville's equation. अगर ये जो Sturm-Liouville's equation है, अगर कोई ऐसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फॉर्म में नहीं लिखी है, so then कुछ ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई करके, by multiplying a suitable factor, we can express that differential equation in form of Sturm-Liouville's equation. Okay, and that integrating factor is, for suppose we have a general second order homogeneous linear differential equation like y double dash a naught x. Say that it is a naught x, a1 y dash x, and a2x plus lambda a3x y is 0. And here this a naught x is not equal to 0. This a naught x is not equal to 0. And this differential equation is defined on an interval a comma b. This differential equation is defined on this interval ab. So we can reduce this differential equation in Sturm-Liouville's equation by multiplying a suitable integrating factor. So first of all, we can write this equation like, firstly we will divide the whole equation by a naught x because a naught x is not 0. So we can write it like this, a1x upon a naught x, a1x upon a naught x, y dash plus a2x upon a naught x plus lambda a3x upon a naught x, y is 0. Okay, here we are taking, say that it is rx. Rx is a1x upon a naught x, and qx is a2x upon a naught x. यहाँ पे substitute कर रहे हैं qx, and px is a3x divided by a naught x. Okay, so we can replace this term. So we can write y double dash is rx y dash plus qx plus lambda px y is 0. Okay, we want to reduce this second order homogeneous linear differential equation as Sturm-Liouville's equation. So we will use an integrating factor. We will multiply both of this differential equation by an integrating factor, and that integrating factor is exponential integration of rx. यहाँ पे जो भी वैल्यू है हमारे पास, जो भी कोफिशिएंट है, rx into dx. It will be the integrating factor. So now multiplying this factor with the whole equation, say that it is equation number 3. Okay, now multiplying this equation number 3 by this integrating factor. Okay, so we will get rx dx y double derivative plus rx exponential rx dx y dash plus qx rx dx plus lambda px e integration rx dx
y is 0. Okay. So by seeing these first two terms of this differential equation, ये जो terms हैं, इनको देख के हम इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? What we can write in place of these two terms? मैम e की पावर इंटीग्रेशन rx dx into y dash का इसका डेरिवेटिव. Yes. So in place of this first two term we can write, because you know that अगर आप इसको, you know that if you will integrate this factor rx dx, इस फैक्टर को अगर डिफरेंशिएट कीजिए तो you will get rx and rs dx. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x, then it will give you rx into integration of rx dx. So first term was rx dx and dy by dx, and second term was rx dx dy by dx. तो यहां से आप देख सकते हो इसका डेरिवेटिव जो है ये होता है. So by the product rule of differentiation we can write in place of these two terms, we can write here whole derivative of e to power rs dx dy by dx. ये हम लिख सकते हैं. We can write in this manner. Okay, so now our equation will be d by dx, first term will be dy by dx, exponential of rx dx dy by dx, and rest of two terms will be qx integral e to power rx dx plus lambda times px into exponential of rx dx, y is 0. Okay, now here we are substituting, let this rx dx, we are denoting it by small rx. Okay, and this qx and rx dx, we are writing it small letter में px, sorry qx, sorry, it should be qx, and this px e to power rx dx, this can be write as px. Okay, so now this equation, say that equation number 4 can be write as d by dx rx dy by dx qx plus lambda px y is 0. In this form we can write this differential equation. It means that if our given differential equation is not in Sturm-Liouville's problem, Sturm-Liouville's equation, so we can reduce it in the Sturm-Liouville's equation by multiplying the suitable integrating factor both sides of that differential equation. Okay, and this function rx, qx, px and r dash x, both are continuous real valued function over the whole interval where the function is, where this differential equation is defined. So these three function rx, px, qx and r dash x are continuous real valued function over the whole interval a to b. So this differential equation is defined like this. ओके तो कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम स्टर्म-लिउविल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके तो एक इससे रिलेटेड इक्वेशन कर लेते हैं. रिलेटेड इक्वेशन आई थिंक तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. एक सेकेंड, तो इक्वेशन यहाँ पे मैं इसे कन्वर्ट करना स्टर्म-लिउविल इक्वेशन में.
Okay. So here I am giving you an equation. X y double dash plus 1 minus x y dash plus ny 0 ny 0 and x is not equal to 0. X is not equal to 0. So यानी domain क्या है इस equation का? This equation is defined in the whole real interval except this point x is 0. So इस differential equation को it is a simple second order homogeneous linear differential equation. Now convert this differential equation, reduce this differential equation in Sturm-Liouville's equation. Convert कीजिए, कैसे करेंगे? You can write here, you can see here Rx is 1 minus x upon x. Capital Rx is 1 upon x and Qx is 0 here and Px is अच्छा x से डिवाइड कर रहे हैं हम, ये हमारे पास आ जाएगा 1 by x and lambda is n. Lambda is n here. क्या करें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए? We have to find the integrating factor. You know that integrating factor is exponential of Rx dx. Rx dx. So exponential of Rx dx 1 minus x upon x dx. क्या होगा इसकी वैल्यू बताइए? It will be log x minus x. Log x minus x, which will be e to power log x, e to power minus x. X into minus x. So small rx will be x into e to power minus x. Okay, now qx is qx into this rx e to power rx dx. So it will be 0. Px is capital Px yani 1 by x rx dx. So this will be e to power minus x. This will be e to power minus x. Now substituting all this value, Sturm-Liouville's equation will be d by dx x into e to power minus x dy by dx plus qx is 0 lambda n, lambda means n, and px was e to power minus x, y is 0. So n e to power minus xy, this will be the equation. Sturm-Liouville's equation corresponding to given equation. Okay, one more question. One more question. 1 minus x square y double dash x y dash plus n square y is 0, and this equation is defined in the interval 1. इस इक्वेशन को Sturm-Liouville's इक्वेशन में लिखिए, Sturm-Liouville's इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस कीजिए. दिस स्टार्स फॉर यू. जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए कि इक्वेशन क्या होगी हमारी. Rx, Qx, Px एंड लैम्डा क्या होगा इस केस में.
कंप्लीट हुआ? Did you get the equation? Yes, ma'am. हाँ बताओ क्या है? Ma'am, d by dx of y dash into under root of 1 minus x square. 1 minus x square and dy by dx. Okay. dy by dx. Then मैम प्लस फिर अगले ब्रैकेट में मैम n स्क्वायर इंटू n square into वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 upon में. यस मैम. Yes. Into y. यस Into. मैम. Okay. Yes, correct. It will be the Sturm-Liouville equation for this given corresponding differential equation. Okay. So it is all about the Sturm-Liouville equation. Now, our main motive is Sturm-Liouville problem. So Sturm-Liouville problem is actually a boundary value problem, which consists of a homogeneous second order differential equation. About that, which I have already discussed in previous slides. And this when we are consider this differential equation, homogeneous second order differential equation, with a pair of homogeneous boundary condition. So now we will discuss about the boundary condition. So this second order homogeneous differential equation with homogeneous boundary condition is called Sturm-Liouville's boundary value problem. Yeah, in short, Sturm-Liouville's problem. So now we will discuss about the boundary condition. Okay, you know that differential equation is defined here on a interval a to b, and on this interval our px, qx, rx, and r dash x are real valued continuous function on that interval. Okay, and we also assume that this px is greater than 0. It is positive on whole interval a and b. Then the boundary condition of the form a1 y a a2 y dash a is 0. Homogeneous because the right hand side of this differential equation is 0. That's why we are saying that it is homogeneous boundary condition. And second condition is b1 yb plus b2 y dash b. So together with this boundary condition and differential equation, when we are considering the differential equation, Rx y dash plus Qx lambda Pxy is 0. So ये differential equation together with this boundary condition is called Sturm-Liouville's problem. इसी को हम Sturm-Liouville's problem कहते हैं. And this constant a1 a2 both are not 0. एक साथ जो है ना दोनों 0 नहीं होंगे. At least one is non-zero. So a1 and a2 both are not 0. Same way b1 and b2 both are not 0. Okay. So along with this boundary condition, this differential equation, when we are considering, it is known as Sturm-Liouville's boundary value problem. Okay. आप देख सकते हो कि पहली वाली कंडीशन जो है वो केवल इस बाउंड्री पॉइंट पर डिफाइंड है ए पे, एंड सेकंड वाली जो कंडीशन है इट इज डिफाइंड ऑन द सेकंड पॉइंट बी. So these are also known as separated boundary condition. These are also known as separated boundary condition. Okay, you know that our differential equation is homogeneous type. Boundary condition is also the homogeneous type. So obviously, y is equal to 0. Y is equal to 0 is always the one of the solution for this
Sturm-Liouville's problem, but this solution is called trivial solution. This is always the solution of homogeneous boundary value problem. Yx0 is always a solution of homogeneous boundary value problem, which is known as trivial solution. But we are more interested in the finding non-trivial solution. So we are interested to find the non-trivial solution. So value of lambda for which we get non-trivial solution, that then that value of lambda is called eigenvalue. That value of lambda is called eigenvalue for SLP. For this SLP, अगर लैम्डा की किसी की वैल्यू के लिए, फॉर पर्टिकुलरली किसी लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए, इफ वी आर गेटिंग अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी कि इस इंटरवल ए और बी पर वी गेट अ yx which is not equal to 0. So that value of lambda is called eigenvalue for this SLP, and this function yx corresponding to that lambda is called eigenfunction, and this non-trivial solution yx is called eigenfunction. आइगन बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी बोलते हैं, इसी तरह से आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कह सकते हैं. सो दैट वैल्यू ऑफ yx, नॉन ट्रिवियल वैल्यू ऑफ yx इज कॉल्ड द आइगन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन. ओके, एंड इफ yx is eigenfunction for SLP, then for k not equal to 0, k times yx is also eigenfunction or characteristic function for that SLP. Okay, it is called again k times yx is yani scalar multiple. If k is a non-zero scalar, so scalar multiple of yx is again a eigenfunction for SLP. Okay, अब इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप की SLPs होती हैं, उनके लिए हम बाद में बात करेंगे. पहले एक सोल्यूशन देख लेते हैं, किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन देख लेते हैं. 1 सेकेंड. Problem is find the eigenvalues and eigenfunction of boundary value problem y double dash lambda y0, and boundary condition here is y0 is 0 and yl is 0. Okay, y0 is 0, yl is 0. Okay, and 0 to l हमारा interval. So question is find the eigenvalue and eigenfunction for y double dash lambda y0. Yes, and boundary condition is y0 is 0 and yl is 0. So for this SLP we have to find eigenvalue and eigenfunction. Okay, so we have to solve this equation for different cases, different value of this lambda. So there are 3 possible cases. Either this lambda will be 0 or this lambda is positive. One more case will be when lambda is takes the negative values. So we are considering the first case when lambda is 0. Okay, when lambda is 0, so this differential equation will be reduced to y double dash 0. If lambda is 0, then this equation will be reduced to y double dash is 0. Now the solution for this differential equation will be, we will get a solution of this differential equation by simply integrating this differential equation both sides. This will give you y c1x plus c2. Am I right?
यही होगा ना सोल्यूशन? Yes, ma'am. Yes, Straight ma'am. line. Okay. Now we have to find the value of this C1 and C2. तो ये boundary condition से ये C1 and C2 मिलेंगे. So first of all, we are substituting x is equal to 0 both sides. So when x is 0, y is also 0. So this term will be 0. We will get C2. It will give you C2 is 0. Okay. Again, when x is L, so y is 0. So now substituting in this equation, say that it is equation 1 and this is 2. So now in this equation 2, we are substituting x is equal to L both sides. So again, value of this y will be 0 and C1L plus C2. C2 is 0 here. So you know that L is not 0. L हमारा non-zero कोई भी value है. So this will imply that C1 is 0. So both C1 and C2 is 0. It means that we are getting here for lambda is equal to 0. We are getting y is equal to 0 solution over the whole interval. It means that we are getting only the trivial solution here. यहाँ पे हमें लैम्डा की वैल्यू जब 0 है तो कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. वी आर गेटिंग अ ट्रिवियल सोल्यूशन. Okay, now come on the second case. Case 2. Here we are taking that let lambda is taking only positive values. Say that it is k square. लैम्डा केवल पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो हमने ले लिया k स्क्वायर क्योंकि k कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे we always get a positive value. Now substituting this value of lambda in equation number 1. So we will get y double dash plus k square y is 0. Okay, this is simply a second order homogeneous linear differential equation with constant coefficient. So what will be the solution for this differential equation? Solution बताइए क्या होगा जनरल solution for this differential equation? इस तरह के differential equation आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. Ma'am, A sin. A sin kt plus B cos Yes. kt. Yes, ma'am. Yes. A sin k x होगा ना, y is function of x. Sorry, ma'am. X. चलिए टी कुछ मेंशन तो था नहीं, ठीक है आप टी भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं. b cos kx. ओके सही है. Yes, Plus ma'am. minus this will be yes. Okay, now we will use the boundary condition that was y0 is 0 and yl is 0. So first of all, we are substituting both sides x is equal to 0. So at x is equal to 0, sign will be 0. So b cos 0 is 1. So this is simply giving you b is 0. Okay, now in the same equation, substituting x is equal to L both sides. So right, left hand side will be 0 and on the right hand side, we will get a sin KL. A sin KL. For non-trivial solution, because we are more interested in non-trivial solution. So non-trivial solution के लिए हम क्या लेंगे कि a is not equal to 0. So we are assuming here a is not equal to 0. So this will imply that sin KL is 0. Sin KL is 0. And when sin KL is 0, a is not for non-trivial solution. For non-trivial solution, we will take this a is not equal to 0. So sin KL is 0. And इस equation को solve करेंगे तो what we will get? KL is n pi. KL will be n pi. So from here we can find this value of k, which will be n pi L. So solution in that case is y a sin n pi L x. अब this value of जो y की वैल्यू वो डिपेंड कर रही है n कैन टेक्स द वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन. ये वैल्यू ये अज्यूम कर सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं yn बिकॉज हर एक केस में an अलग होगा yn अलग होगा. सो वी कैन टेक इट yn इज इक्वल टू an sin n pi x अपॉन l. सो
this lambda was, what was the lambda? Lambda was k square. So lambda will be, here lambda will be n square pi square upon L square. So this is the eigen values. These are the eigen value for given SLP. यहाँ पे ये आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, यानी कि n की डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग आइगन वैल्यू मिलेगी एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी एंड दैट विल बी आइगन फंक्शन. सो n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर विल बी आइगन वैल्यू, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है ये. सो दिस yn is an into sin n pi x by L, it is आइगन फंक्शन. ये हमारा आइगन फंक्शन है. ओके, one more case we have to discuss. Case third. Sorry. So we have considered here lambda is minus k square, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं lambda नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है. So our problem will be minus k square y is 0. Boundary condition is y0 is 0, yl is 0. So again हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा? e to the power kx plus b e to the power minus kx. Yes, e to power kx plus b to power minus kx. So now we have to find the value of this a and b for this boundary condition. So again substituting x is equal to 0 both sides, this will give you a plus b. Okay, एक कंडीशन हमें ये मिल गई. Again substituting x is equal to L both side, left hand side will be 0, e to power kl plus b to power minus kl, and from here you can write b is equal to minus a. So this will give you e to power kl minus e to power minus kl. अब ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये फंक्शन क्या कभी जीरो हो सकता है? ये फंक्शन जीरो होने का मतलब क्या है? माइनस के एल जीरो. इट मीन्स दैट e टू पावर टू के एल माइनस वन इज जीरो, यानी टू के एल वन. ये वन वैल्यू कब लेगा बताइए? e टू पावर टू के एल इक्वल टू वन कब लेगा वैल्यू? मैम के जब जीरो, k0, तो के जीरो तो हमारा केस वन आ जाएगा, तो के तो हम Yes, जीरो ma'am. यहाँ ले नहीं सकते, है ना? के Yes, इज ma'am. अदर देन जीरो, तो इट मीन्स दैट इट विल बी नेवर इक्वल टू वन. तो ये टर्म हमारा जीरो होगा नहीं, दिस टर्म विल बी नेवर जीरो. इट मीन्स दैट अगर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फैक्टर इज जीरो, इट विल सिंपली इम्प्लाई दैट a is 0, and when a is 0, b is automatically 0. So again a और b 0 हो गया इस केस में, so we are getting only the solution y is 0. So lambda की नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमेशा हमें एक ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो हमें जो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन मिलेंगे हमेशा किसके लिए मिलेंगे इस प्रॉब्लम में? when lambda is positive. So when lambda is positive, then only we are getting eigenvalues, and then eigenvalues will be n square pi square upon L square, and corresponding eigenfunction will be an into sin n pi x by n. Okay. कुछ थ्योरम है, थ्योरम को मैं कल डिस्कस करूंगी. थोड़ा सा SLP के बारे में पढ़ लेते हैं, किस किस तरह के SLP है. So there are basically three types of SLP. SLP is called regular if this Rx, Px तो हमेशा हर केस में हमारा क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो हम एज्यूम करते हैं, इज इट ग्रेटर देन जीरो. So if SLP is regular if Rx is greater than zero and Px is greater than zero on AB, and it is called the singular SLP when RA is R इसमें यहाँ पे इक्वल टू RB लिख दिया. ऐसा तो हमेशा जरूरी नहीं कि RA इक्वल टू RB हो, इनमें से एटलीस्ट वन भी अगर जीरो हो रहा है तब भी वो सिंगुलर हमारा कहलाता है. SLP विल बी सिंगुलर if either RA is 0 or RB is 0.
and SLP is called periodic. SLP is called periodic in the case when RA is equal to RB. RA is equal to RB. In that case, हम separated boundary conditions के अंदर SLP को नहीं solve करते हैं. That condition is replaced by this condition. YA is equal to YB and Y dash A is equal to Y dash B. तो अगर हमारे पास जो SLP है वो periodic है, वो किस केस में मिलेगी? जब RA is equal to RB होगा. और both केस में हमारी बाउंड्री कंडीशन जो होती है वो YA is equal to YB and Y dash A is equal to Y dash B हो जाती है. ठीक है. अदरवाइज हमारी जो SLP है वो रेगुलर कहलाएगी. जब हमारी ये जो कंडीशंस हैं RA और RB ये हमारी नॉन जीरो हैं, तो हमारी SLP जो है वो कहलाती है रेगुलर SLP. ओके. इस कंडीशन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ओके, ये भी जानते हैं कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन होता है एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वी आर गेटिंग अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इज नोन एज आइगन वैल्यू फॉर द एसएलपी एंड yx इज नोन एज आइगन फंक्शन. एंड इफ yx इज द आइगन फंक्शन, सो उसका कोई भी नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल इज अगेन द आइगन फंक्शन. और आइगन वैल्यूज का जो कलेक्शन होता है पूरा वो कहलाता है स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रॉब्लम. स्टर्म लिउविल थ्योरम की बात हम कल करेंगे क्योंकि इसका प्रूफ कल ही करा पाएंगे. सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम, ये बात कर लेते हैं. द आइगन वैल्यू ऑफ एसएलपी आर रियल एंड नॉन नेगेटिव. हमेशा जो है एसएलपी की जो आइगन वैल्यूज होती हैं दे आर रियल एंड नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव होती है इसलिए हमने n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन ली थी, माइनस n नहीं ली थी. आइगन वैल्यूज जो है हमेशा एक मोनोटोनिक नेचर को फॉलो करती हैं. इस तरह से λ1 इज लेस देन λ2 इज लेस देन λ3 एंड सो ऑन. एंड दिस लिमिट λn is approaching to infinity as n tends to infinity. हाँ, for each lambda in SLP there exists one and only one linearly independent eigen function. एक लैम्डा जो है एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन मिलेगा वो 1 होगा. 1 एंड ओनली 1. ऐसा नहीं होगा कि λ1 एक हमारी आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन मिले. लीनियरली डिपेंडेंट कई हो सकते हैं पर लीनियरली इंडिपेंडेंट एक ही आइगन फंक्शन होगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने बेसिस फंक्शन का ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी नहीं प्रूफ कराई थी, कहा था कि जब स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम पढ़ेंगे तभी हम इसकी बात करेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी हमारी कि अगर कोई स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम है उसकी दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज मान लीजिए λm एंड λn है. λm and λn are two distinct eigen value for the SLP and corresponding eigen function is ym and yn. Ym is eigen function corresponding to this eigen value λm and yn is eigen function corresponding to this eigen value λn. So these two functions must be orthogonal on this interval AB, over this whole interval AB with respect to weight function. अब यहाँ पे weight function क्या है? आइगन वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होती है दैट फंक्शन इज कॉल्ड वेट फंक्शन. So dy dx rx dy by dx plus qx lambda into px y is 0. So this function, ये जो फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इट इज वेट फंक्शन फॉर दिस आइगन वैल्यू लैम्डा. तो लैम्डा के साथ जो ये मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है दैट इज वेट फंक्शन. ओके, सो फॉर सपोज दैट हमारी जो ये गिवन एसएलपी है इसके लिए आइगन वैल्यूज है एक लैम्डा m एंड लैम्डा n. बोथ आर डिफरेंट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज eigen function is ym and corresponding to lambda n eigen function is ynx. And interval where this differential equation defined is interval a to b. Then these two functions must be orthogonal with over this interval ab with respect to this weight function. It means that integral from a to b ymx ynx and weight function dx is 0.
this must be 0. It is called the orthogonal property. तो different SLP के corresponding जो eigen functions होते हैं, they will be orthogonal over the whole interval with respect to eigen function until this m is not equal to n. And each yn has exactly n minus 1 0 in the interval a to b. a to b open interval के अंदर ynx जो हमारा आइगन फंक्शन है उसकी जो नंबर ऑफ जीरो होंगे एग्जैक्टली n माइनस 1 zeros होंगे. इसीलिए कि आपने देखा होगा J0 की बात करते थे हम जब वहां पे बेसल फंक्शन में ऑर्डर 0 का तो एक 0 निकालते थे. J1 की बात करते थे तो उस तरह से हमारे पास मिलते थे इसके n minus 1 zeros. Okay. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन sin x जो है n is 1 2 3 and so on. So लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे n है. आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल ओवर 0 to pi. वेट फंक्शन यहाँ पे है 1. देखिएगा दो अलग अलग लीजिए sin nx और sin mx. उसको इंटीग्रेट करिए फ्रॉम 0 to pi विद वेट फंक्शन 1. इसकी वैल्यू हमारी 0 आएगी. You have to Yes, prove madam. that. You have to prove that 0 to pi m is not equal to n. Sin mx sin nx and weight function px is 1 dx. आपको शुरू करना है दिस इंटीग्रल मस्ट बी इक्वल टू 0. मतलब ये एक ऑर्थोगोनल फंक्शंस हैं करस्पॉन्डिंग टू. इसी तरह बेसल फंक्शन के लिए दिखा सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. इसी से हम जो है ना बाद में ऑर्थोगोनैलिटी की बात करेंगे बेसल फंक्शन के. So JMX is denoting Bessel function of first kind of order n. और इसका जो रूट्स हैं nth रूट अगर इसकी बात करें तो उसे डिनोट कर रहे हैं अल्फा m. अल्फा m मतलब बेसल फंक्शन के रूट की बात कर रहे हैं और nth रूट की बात कर रहे हैं इसलिए सफिक्स में n लिखा है. So alpha mn is denoting the nth positive roots of this function JMX. So this will be the let alpha mn is nth positive root of the function ynx where ynx is jm alpha mn x by a. इसका जो है ये रूट है. सो दिस फंक्शन देन दिस फंक्शन ये जो फंक्शन हमारा है इट विल बी पेयर वाइज ऑर्थोगोनल ओवर द इंटरवल 0 to a. ये जो a लिखा हुआ है रिलेटेड टू वेट फंक्शन x. इसके लिए हम चलिए नेक्स्ट क्लास में इसमें बात करेंगे इसके बारे में. ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनको आप प्रूफ कर सकते हो कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शंस फॉर्म करते हैं. They will form the orthogonal functions. Okay. चलिए इसकी स्लाइड बाद में करेंगे. पहले मैं SLP के कुछ एग्जांपल्स और SLP थ्योरम जो है स्टर्म-लिउविल थ्योरम इसके लिए कल बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में. So today I am ending this class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.